Surface energy. So in the last class, what we had done is molecular theory of surface tension and what is surface tension, and so these are the thing, intermolecular forces. ये सारी चीजें हम लोगों ने की थी पिछली क्लास में, है ना. मॉलिकुलर रेंज क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, सरफेस फिल्म क्या होता है ना. मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी. So we'll continue from where we stopped. We'll start with surface energy. So we know that free surface of a liquid at rest tends to contract in order to have a minimum surface area due to surface tension. And whatever free surface is there, that will try to contract, or contract करके it will try so that it has a minimum surface area. Okay. So we know that free surface of liquid at rest tends to contract in order to have minimum surface area due to surface tension. Thus, if the area of free surface of the liquid has to be increased, some work will have to be done against the force of surface tension. This work done appears in the liquid surface as the potential energy of increased area. This potential energy of increased area is called its surface energy. So basically क्या है कि बिकॉज ये अपना एरिया सब मिनिमम रखना चाहेगा, सो अगर हम लोग को एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड उसको इंक्रीज करना है एरिया को, तो हम लोग को वील हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि इट विल ट्राई टू attain a minimum area, and if we want to increase the area, you will have to apply an external force to do that, and you will have to do some work, right? So some work will have to be done against the force of surface tension. This work done appears in the liquid surface as the potential energy E of increased area, right? So this potential energy of increased area is called its surface energy. Okay. So hence, surface energy of given liquid surface is defined as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at a constant temperature. तो surface energy को क्या define करेंगे? So it is the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area. तो उस area के liquid surface को बनाने के लिए जितना amount of work done किया हमने, that is equal to, that is saved as, that would be saved as the surface energy in forming the liquid surface. So to obtain an expression for surface energy, we'll have to calculate the work done, right? So to obtain an expression of surface energy, take a rectangular metallic frame ABCD. तो ये ABCD एक frame लेते हैं, having a wire PQ which can slide along the side AB and CD. तो उसमें एक wire ले लेते हैं PQ. अब ये wire PQ can slide along the sides AB and CD. तो ये दोनों sides पे ये slide कर सकता है, AB और CD वाली side. Form a soap film BCQP on the rectangular frame. तो एक soap film बनाते हैं BCQP, ठीक है. So form a soap film BCQP on the rectangular frame. There will be two free surfaces of the film where air and soap film are in contact. So ये जो, there are two free surfaces of the film. एक surface ये सामने वाला और एक इसके पीछे वाला, right? एक ये सामने वाला और एक ये इसके पीछे वाला. दो surfaces होंगे, एक one which we are seeing from front and one at the back. So there will be two free surfaces of the film where air and soap film are in contact. The force of surface tension act tangentially inwards and perpendicular to the sides on both the free surfaces. तो देखो ये अंदर की तरफ लग रहा है, perpendicular to the sides and inwards, right? तो एक surface पे ये लग रहा है और दूसरे surface पे ये लग रहा है ना. एक सेकेंड बच्चों.
ठीक है, तो so there will be two free surfaces of the film where air and soap film are in contact. The forces of surface tension act tangentially inwards and perpendicular to the side on both free surfaces. तो ये देखो अंदर के तरफ और perpendicular to both free surfaces. ठीक, so the forces of surface tension act tangentially inwards and perpendicular to sides on both free surfaces of the film as shown in the figure, all other sides being fixed. So we can increase the surface area of soap film by displacing the sliding wire PQ outward. देखो बाकी जो sides हैं, ये BP है या BC है या CQ है, ये सारे edges क्या हैं, fixed है. तो जो edge move कर सकता है वो PQ है. तो एरिया को अगर इंक्रीज करना है तो इस PQ को ही हम बस स्लाइड कर सकते हैं राइट की तरफ. लेट्स से हम लोग एक फोर्स F लगा के इसको राइट की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, है ना. नाउ द सरफेस टेंशन ऑन द सोप सॉल्यूशन इज लेट्स से S. L इज द लेंथ ऑफ द वायर PQ. इसका जो लेंथ है ना, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ L है. सो L इज द लेंथ ऑफ द वायर PQ. Since there are two free surfaces of the film and surface tensions act on both of them, hence total inward force on the wire PQ is F is equal to S into 2L. So basically हम लोग को पता है surface area क्या होता है, surface tension क्या होता है, force divided by length L. अब because since there are two free surfaces, है ना, ऐसे ऐसे दो free surfaces हैं, तो surface tension इंटू लेंथ एल, एक इधर इस वाले सरफेस के लिए और एक दूसरे वाले सरफेस के लिए, तो एस इंटू एल और एस इंटू एल, तो एस इंटू टू एल हो गया. तो एस इंटू टू एल इज इक्वल टू द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. To increase the area of the soap film, we have to pull the sliding wire PQ outward with a force F. Let the film be stretched by displacing the wire PQ through a small distance x to position P1 Q1. तो अब ये PQ से P1 Q1 तक हम लोग इसको जो शिफ्ट करते हैं x डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, लेट्स से, राइट. तो the increase in area of the film PQ Q1 P1, so ये जो है ये हमारा increase in area है, right. This is equal to delta A or 2L into x, है ना, twice of L into x. एक एरिया सामने वाले सरफेस का, एक पीछे वाले सरफेस का, इसीलिए ट्वाइस ऑफ L into x कर रहे हैं. रेक्टेंगल का एरिया L into x ही होगा, बट दो सरफेसेस है ना, सामने वाला और पीछे वाला, इसीलिए ट्वाइस ऑफ L into x हो गया इसका इंक्रीज इन एरिया. तो डेल्टा ए ये हो गया, ठीक है. Now work done in stretching the film is force applied by distance move. Work done force into distance होता है. Force है हमारा S into 2L और distance जो है x है. S into 2L into x. 2L into x basically delta A हो गया. हम लोगों ने अभी देखा था increase in area is equal to 2L into x है. तो S into delta A हो गया. So where 2Lx is delta A is increase in the area of the film on both the sides, है ना, front side और back side दोनों का. L into x is increase in the area of film on one side. तो दोनों side का L into x plus L into x 2Lx हो गया. Now if temperature of the film remains constant in this process, this work done is stored in the film as its surface energy, right. So work done is stored as surface energy. So ये जो एनर्जी सरफेस एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है वर्क डन, ठीक है. सो S इज इक्वल टू वर्क डन W डिवाइडेड बाय डेल्टा ए और E डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, राइट. सो हेंस surface tension of a liquid is numerically equal to the surface energy per unit area of liquid surface. So surface tension of a liquid जो है S that is numerically equal to surface energy per unit area. E by delta A मतलब surface energy per unit area is surface tension. So if increase in area is unity, delta A अगर 1 है, तब उस केस में जो वर्क डन है that is equal to S surface tension.
So therefore, surface tension may be defined as the amount of work done in increasing the area of liquid surface by unity against the force of surface tension at a constant temperature. ठीक है? Now, when a liquid is in contact with solid and air, then surface energy depends on material on both the sides of the liquid surface. So if the molecules of the material attract each other, surface energy is reduced. If they repel each other, the surface energy is increased. In fact, the surface energy is the energy of the interface between two materials and depends on both of them. Note that surface tension is not a vector quantity, but it is a scalar quantity. सो सरफेस टेंशन क्या हो गया, वर्क डन बाय सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया, है ना, ये हम लोगों ने अभी देखा भी था सर, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया एस इनटू डेल्टा ए था. तो सरफेस टेंशन इज वर्क डन बाय सरफेस एरिया, वेयर वर्क डन एंड एरिया आर स्केलर्स. ठीक है. अच्छा, अब ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, हाउ टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एक्सपेरिमेंटली is take a flat vertical glass plate of length L. ठीक है, तुम्हारे पास एक ग्लास प्लेट है लेंथ L का, राइट. Suspend it vertically from one arm of physical balance with the help of a string. Place a vessel of liquid whose surface tension is to be determined. Now below the glass plate and see that, so place a vessel of liquid below the glass plate and see that the plate does not touch the liquid. तो हम लोग इसको, we place a liquid below the glass plate, right, so that it does not touch the liquid. Okay, so adjust suitable weight in the pan attached to other arm of the balance so that the beam of the balance is horizontal. तो हम लोगों ने इसको, इसमें इस तरह का वेट डाल रखा है कि ये जो बीम है ये हॉरिजॉन्टल है. That is, the plate is balanced by the weight in the pan of balance. Now raise the level of the vessel such that the liquid in vessel just touches the glass plate. इसको raise करेंगे ऐसे जिससे कि ये liquid जो है ना just touch कर रहा हो glass plate को. Now the liquid pulls the glass plate down because of surface tension. तो बिकॉज ये लिक्विड जो है अब ये ग्लास प्लेट को नीचे की तरफ पुल करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. एड एक्स्ट्रा वेट, दैट इज weight W is equal to mg in the pan attached to the other arm of balance so that the plate just clears the liquid. Then force on glass plate due to surface tension is equal to extra weight in pan. तो पहले जो pan पे weight था, बाद में जो weight हमने extra weight डाला है, वो जो एक्स्ट्रा वेट है वो इधर जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है. अब इसमें दो सरफेसेस होंगे, एक ये सरफेस सामने जो दिख रहा है और एक जो पीछे के साइड से जो सरफेस है वो. सो सरफेस टेंशन S इंटू 2L. ठीक है, सो S इंटू 2L कर देंगे. दिस इज द वर्क डन, दिस इज इक्वल टू वेट बेसिकली. S इंटू 2L इज द फोर्स रिक्वायर्ड. सो S इंटू 2L will be equal to the weight mg, जो ऊपर की तरफ फोर्स S into 2L लग रहा है. So S into 2L is mg और S is equal to mg by 2L हो जाएगा. तो ये सरफेस टेंशन हम लोग इससे मेजर करते हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा वेट हमने डाला है mg डिवाइडेड बाय द लेंथ, ये जो L है, L और L 2L हो गया, एक सामने वाला सरफेस बाद वाला पीछे वाला सरफेस. तो S is equal to mg by 2L करके हम लोग सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर इंटरफेस जो है निकाल लेते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो ये डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है बेसिकली. नाउ एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड. सो we know that a liquid molecule on the surface of liquid is attracted by forces of cohesion in all direction and force of surface tension act tangentially to the liquid surface at rest. So देखो forces of cohesion तो हर direction में होगा और surface tension will act tangentially to the liquid surface at rest.
the direction of the resultant force on a molecule on the surface of liquid depends upon the shape of the liquid surface. अभी अगर liquid surface plane है, मतलब ऐसे straight line में है ऐसे, so if the liquid surface is plane, then the molecule on the liquid surface will be equally attracted on all the sides. तो ये देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग सरफेस पे देखेंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर डायरेक्शन में, मतलब अगर इस तरह का एक सर्कुलर सरफेस देखो तो एवरी डायरेक्शन इट विल बी पुल्ड इक्वली. ठीक है. So if liquid surface is a plane, then molecule on the liquid surface will be equally attracted on all the sides, and the forces S, S of surface tension will be acting tangentially to the liquid surface in opposite direction. So एक S के लिए दूसरा S इसके diametrically opposite होगा. Now hence no resultant force is acting on the molecule O, because सारे force जो एक दूसरे को balance कर रहे हैं हर side में, it means the resultant force acting normally to the liquid surface is 0. ठीक है. तो ये जो resultant force है, ये this is acting normally to the liquid surface is 0, right? Now as a result, no extra pressure is communicated to the inner side or outside of liquid surface. Thus the pressure on the liquid side is equal to the pressure on the vapor side in case of a plain liquid surface. तो ये हमारा liquid surface side हो गया और ये हमारा vapor side हो गया, ठीक है. So pressure on the liquid side is equal to the pressure on the vapor side in case of plain liquid surface. तो देखो plain liquid surface है ना, उसमें जितना pressure इधर होगा उतना ही pressure इधर होगा, इसीलिए वो एक plane के form में है ना. So no extra pressure is communicated to inner side or outside of the surface. Now rest of the two cases, ये जो excess pressure वाला B और C वाला जो आप देख रहे हैं, if the liquid surface is curved, the molecule on the liquid surface is acted upon by the forces S, S due to surface tension along the tangents to the surface, figure B and C. तो दो surfaces हम लोगों ने देखा है, right? एक देखो यहाँ पे ये जो surface है, यहाँ पे टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में एक S इधर हो जाएगा, सरफेस टेंशन इधर, सरफेस टेंशन S. अब इसका ये जो कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट तो एडअप कर देगा तो नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो एक्सेस फोर्स, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बिकॉज आप लिक्विड पे नीचे फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिंग दैट फोर्स. सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला सरफेस देखें, मतलब यहाँ पे लिक्विड इधर है और एयर इधर है, अब यहाँ पे भी जो सरफेस टेंशन है वो इस तरह से एक्ट करेगा, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये एक्सेस प्रेशर को बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस करेगा. So if the liquid surface is curved, the molecules on the liquid surface is acted upon by the forces S, S due to surface tension along the tangent to the surface as shown in figure B and C. Resolving these forces into horizontal and vertical component, हमने देखा कि horizontal components एक दूसरे को balance कर देगा. We note that the horizontal components cancel each other, whereas vertical component add up. So thus the resultant force would be acting on the curved surface of the liquid, which act towards its center of curvature. It means the resultant force is directed inwards in case of convex surface and is directed outward in case of concave surface. So in order that the curved surface of liquid may be in equilibrium, there must be an excess of pressure on its concave side over that on the convex side.
ठीक है, तो ये जो शेप है, ये शेप इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कनकेव साइड में यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे जो कन्वेक्स साइड है उधर लेसर प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, so the forces of excess pressure may balance the resultant force due to surface tension, hence तो ये जो एक्सेस प्रेशर यहाँ पे होगा, ये इस रिजल्टेंट फोर्स जो सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है उसको बैलेंस करेगा ये एक्सेस प्रेशर। Hence, for the curved surface of liquid in equilibrium, the pressure on concave side of liquid will be greater than the pressure on convex side. This is very important. ठीक है, कभी भी curved surface of liquid की बात जब आएगी तो उस समय हमेशा कनकेव साइड पे ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्स साइड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो अब हम लोग तीन केसेस देखेंगे, एक लिक्विड ड्रॉप देखेंगे, एक सोप बबल देखेंगे और एक एयर बबल देखेंगे जो कि लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो जब ये लिक्विड ड्रॉप है मतलब कि इसके अंदर लिक्विड भरा है और बाहर क्या है, एयर। लिक्विड ड्रॉप है तो इधर वाला सरफेस एयर हो गया, और लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर लिक्विड भरा है। राइट, सो कंसिडर a liquid drop of radius r, ये लेट्स से इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है that is equal to r. The molecules lying on the surface of liquid drop due to surface tension will experience a resultant force acting inwards perpendicular to the surface. तो ये जो है, देखो हम लोगों ने देखा था कनकेव, जो कनकेव सरफेस, इसके लिए क्या होगा, कनकेव सरफेस ये होगा और कन्वेक्स सरफेस ये होगा। तो ये जो कनकेव सरफेस है, ये वाला सरफेस, इधर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू कन्वेक्स सरफेस। प्रेशर हाई होगा तो ये मतलब इसको अंदर की तरफ ये कर रहा है, सो टेंशन will sorry, the molecules lying on the surface of liquid drop due to surface tension will experience a resultant force acting inwards perpendicular to the surface. Since the size of liquid drop cannot be reduced to zero due to force of surface tension, therefore the pressure inside the drop must be greater than pressure outside it. Now this excess of pressure inside the drop will provide a force acting outward perpendicular to the surface to counterbalance the resultant force due to surface tension. तो ये जो अंदर एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप के अंदर, दिस विल काउंटर बैलेंस, है ना, सो दिस विल प्रोवाइड अ फोर्स आउटवर्ड perpendicular to the surface to counterbalance the resultant force due to surface tension. Now the liquid drop, since it is in equilibrium, okay, and S is the surface tension of liquid drop, let's say S जो है surface tension हो गया liquid drop का, P0 is atmospheric pressure and Pi is total pressure inside the liquid drop. ठीक है, so let's say ये atmospheric pressure P0 है और inside the liquid drop pressure Pi है। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप अगर हम लोग को करना होगा, अंदर की कितना एक्सेस में है, तो दैट इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, Pi माइनस P0। ठीक है, so this will give you excess pressure which is inside the drop. Right, now due to excess pressure let there be an increase in radius of the drop by a small quantity delta r. तो ये जो excess pressure है उसके वजह से जो पहले लिक्विड ड्रॉप का रेडियस r था, अब उसी लिक्विड ड्रॉप का रेडियस जो है इंक्रीज कर गया। ठीक है, कितने से इंक्रीज कर गया रेडियस, डेल्टा आर से इंक्रीज कर गया। Now then work done by the excess pressure, right, so work done by excess pressure is equal to force into displacement. So force क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया हो गया, फोर्स इंटू इंक्रीज इन रेडियस हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, सो increase in radius is delta r,
So excess pressure into area, excess pressure P है, small p, area 4 pi r square है और increase in radius delta r. So this is work done. Now increase in surface area of the drop, that is final surface area minus initial surface area. So 4 pi r plus delta r का होल स्क्वायर माइनस 4 pi r स्क्वायर, ठीक है ना. तो ये फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. डेल्टा आर एक स्मॉल क्वांटिटी ऑलरेडी है, डेल्टा आर का स्क्वायर ये भी जीरो हो गया. तो ये 2r डेल्टा आर इंटू 4 पाई मतलब 8 पाई आर डेल्टा आर हो गया. नाउ नेग्लेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वायर being very very small, increase in potential energy is equal to increase in surface area into surface tension. तो ये हम लोगों ने देखा था सरफेस एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि भाई इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी क्या था, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, एस डेल्टा ए कर रहे थे. तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया हम लोग का कितना है 8 पाई आर डेल्टा आर और सरफेस टेंशन एस है, ठीक है. So as the drop is in equilibrium, the increase in potential energy is at the cost of work done by the excess pressure, right? So therefore, from 1 and 2, मतलब 11 and 12 basically, we get, देखो P into 4 pi r square into delta r ये work done है. That is equal to increase in surface energy, increase in potential energy. So 8 pi r delta r into s हो गया. तो अब ये देखो डेल्टा आर कैंसिल हो गया और 4 पाई आर में यहाँ पे कट करेंगे तो राइट. तो S इज इक्वल टू और स्मॉल p इज इक्वल टू 2s अपॉन r. सो स्मॉल p इज इक्वल टू 2s अपॉन r और pi माइनस p0 इज इक्वल टू 2s अपॉन r. So this is the increase in pressure basically. तो अगर एक लिक्विड ड्रॉप हम लोग लेंगे तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2s अपॉन r, ठीक है. सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप is given by the relation 2s divided by r where s is the surface tension. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब दो और केस लेंगे, एक सोप बबल का है तो ये दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप का केस. अब हम लोग एक सोप बबल का केस लेंगे. सोप बबल में क्या होता है डिफरेंस, वहां पे लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस था जो एक्सपोज था, मतलब एयर और वाटर का एक ही सरफेस था, एयर और वाटर को जो डिस्टिंग्विश कर रहा था. सोप बबल में जो है अंदर भी एयर भरा हुआ है बाहर भी एयर है. तो सोप और सोप बबल में जो सरफेस एरिया होगा वो 2s के बराबर हो जाएगा. दोनों तरफ सरफेस एरिया, अंदर और बाहर दोनों तरफ सरफेस एरिया होगा जो कि एक्सपोज्ड होगा एयर वाटर इंटरफेस. सो कंसिडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस r. द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बबल will experience a resultant force acting inward perpendicular to the surface due to surface tension. So एक हम लोगों ने सोप बबल कंसिडर किया है. यहाँ पे सोप बबल का जो रेडियस है वो r है. Lying on the surface of liquid bubble will lying on the surface of liquid bubble will experience a resultant force acting inwards perpendicular to the surface due to surface tension. इन सब पे अंदर के तरफ फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के वजह से, ठीक है. So since the size of soap bubble cannot be reduced to zero, therefore
the pressure inside the soap bubble must be greater than the pressure outside it. This excess of pressure inside the bubble will provide a force acting outward perpendicular to the surface of bubble to counterbalance the resultant force due to surface tension, and the bubble is in equilibrium. Now let S is surface tension of soap solution, P0 is uh, atmospheric pressure, Pi is total pressure inside the soap bubble. Now excess of pressure inside the drop. So inside the drop अगर excess of pressure निकालना है, this is equal to Pi minus P0. Now due to excess pressure, let there be increase in the radius of the drop by small amount delta r. ठीक है, excess pressure की वजह से अब increase in radius of the drop, ये radius जो है increase कर जाता है let's say delta r से. Now work done by the excess pressure will be force into displacement, right? Force is excess pressure into area by increase in radius. Excess pressure small p से represent कर रहे हैं, है ना? एरिया 4 pi r² हो गया और इंक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर हो गया. ठीक है, सो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो P इंटू 4 pi r² इंटू डेल्टा आर हो गया. Now the soap bubble has two free surfaces, one outside the bubble and the other inside the soap bubble, where soap solution and air are in contact. Effective increase in surface area of bubble, है ना? तो जो टोटल इंक्रीज जो सरफेस एरिया में हो रहा है, पहला 2 times फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. ठीक है, क्योंकि दो दो कॉन्टैक्ट में सरफेस है, एक जो अंदर और उसके बाउंड्री पे और दूसरा बाउंड्री पे और बाहर, तो ये दो सरफेसेस हैं. So effective increase in surface area of the bubble is 2 times the final surface area minus initial. So this will be 16 pi r delta r. Now neglecting delta r square being very very small, इसको हम लोगों ने neglect कर दिया. ठीक है. Now as the increase in potential energy is at the cost of work done by the excess pressure, therefore from 13 and 14 we see that P into 4 pi r², that is increase in pressure by into surface area into delta r, right? Is equal to 16 pi r delta r into S. तो ये increase in potential energy है. ठीक है, increase in surface area into surface tension कर रहे हैं, है ना? So increase in potential energy is equal to cost of work done by excess pressure. So work done by excess pressure P into 4 pi r² into delta r. So this is, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब इक्वेट करेंगे अगर हम लोग, तो देखो डेल्टा आर कैंसिल हो गया, पाई आर एंड पाई आर गेट्स कैंसिल्ड, 4 and 4 is gets cancelled. So basically this P, small p, is equal to 4s upon r. Okay. So where Pi minus P0, P क्या है? Increase in pressure है. ठीक है. So this is equal to Pi minus P0, that is 4s by r. तो वहां पे जब हम लोग लिक्विड ड्रॉप में कर रहे थे वहां 2s by r था इंक्रीज इन प्रेशर. यहाँ पे सोप बबल में देखो 4s by r आ गया, है ना? नोट करना है इस चीज को. Now increase pressure inside an air bubble in a liquid. तो air bubble in a liquid is same as a liquid drop in air. ठीक है, एक ही बात है, तो दोनों केस में सेम ही आएगा. So consider an air bubble of radius r just inside the liquid of surface tension S. The air bubble will have only one free surface as shown in the figure. It acts as a drop proceeding as discussed above.
it can be shown that the excess pressure inside the air bubble is given by P is equal to 2s upon R. ठीक है ना, तो ये देखो एयर बबल इन लिक्विड में भी 2s बाय आर है एक्सेस प्रेशर, और जो वाटर ड्रॉप है एयर के अंदर वहां पे भी 2s बाय आर है, बट सोप बबल जो होगा उसमें दो सरफेसेस अब एक्सपोज हो गए एयर से, एक अंदर वाला सरफेस एक बाहर वाला सरफेस, इसीलिए वहां पे इंक्रीज इन प्रेशर 4s बाय आर हो जाता है. ठीक है. Now some conclusions based on this. When an air bubble of radius, ठीक है, when air bubble of radius a in depth h, so of radius r हो गई. So when an air bubble of radius r is at a depth h below the free surface of liquid of density rho and surface tension s, then the excess of pressure inside the bubble will be equal to, ये जो excess pressure है that will be equal to, एक तो ये 2s by r होता ही है ना एयर बबल का जो यहाँ पे दिख रहा है, और प्लस ऑफ रो जी एच, क्योंकि जो इसके ऊपर मान लीजिए हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड रखा है, इसके अंदर हम लोग एयर बबल की बात कर रहे हैं, तो जितने डेप्थ पे होगा प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. सो इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है आपको, पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2s by r into rho gh. Now if r1 and r2 are the radii of the curved liquid surfaces, तो देखो हमारे पास एक लिक्विड सरफेस है, इस तरह का कर्व्ड लिक्विड सरफेस है, एक रेडियस r1 हो गया, दूसरा रेडियस r2 हो गया आउटर साइड. द कर्वेचर आर इन द सेम डायरेक्शन. दो केसेस है, पहला यहाँ पे दोनों का कर्वेचर, दोनों सरफेस का लिक्विड का कर्वेचर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे जो दोनों सरफेस है उसका लिक्विड का कर्वेचर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. ठीक है. सो द कर्वेचर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, then the excess pressure inside the liquid surface is given by, so इस वाले सरफेस पे, so excess pressure inside is s by r1 plus s by r2, ये excess pressure हो जाएगा. अब सेकेंड केस में, if the curvatures are mutually in opposite direction, so in that case जो excess pressure होगा that will be s by r1 minus s by r2, मतलब एक इस तरफ था और दूसरा इस तरफ था, तो इसका मान लो रेडियस r1 है, इसका r2 है, तो s by r1 minus s by r2 करेंगे, उससे हम लोग को इंक्रीज इन प्रेशर निकल जाएगा, है ना. So if the curvatures are mutually opposite direction, then increase in pressure is s by r1 minus s by r2, where s is the surface tension. Now for a single spherical surface such as a liquid drop or an air bubble in water, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप है या एयर बबल इन वाटर है, तो वहां पे r1 r2 जो है r के बराबर हो जाएगा. ठीक है. सो उस केस में इंक्रीज इन प्रेशर इज 2s by r हो जाएगा. Now, if the surface is a liquid film, it has two free surfaces, then excess of pressure inside. So, अगर ये surface जो है एक liquid film, ठीक है ना, so एक liquid film जो top पे है, तो इसमें दो surfaces हो गया, two free surfaces. Then excess of pressure inside the liquid will be Pi minus P0, that is 2s, 1 by R1 plus 1 by R2 for a soap bubble. ठीक है. वैसे इतना रिक्वायर्ड नहीं है ना, यहाँ तक ही बस करो, इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है नहीं.
So you need to do this only. मतलब these are not required. ज़्यादा है. इसको छोड़ देना. Only do till this proof. Now, after this, we'll do angle of contact and capillarity. ये सारी चीजें करेंगे. Rise of liquid in capillary tube, ascent formula और ये सब सारा चीजें discuss. Next class, I think hydrostatics. We'll be able to finish hydrostatics, and then we can. उसके आगे हम लोग फिर hydrodynamics start कर सकते हैं. किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो बताओ. Do you guys have exams? अभी कोई एग्जाम वगैरह नवंबर दिसंबर में है क्या आप लोग का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. Is it a half yearly kind of exam or some small test of 30 marks? Sir, like term 2 स्कूल कह रहा है कि term 2 end के एग्जाम्स है पर 35 मार्क्स के ही है या 50 मार्क्स के हैं बस. अच्छा. चैतन्य आपका? So 20 or 25 marks. So I think PT2 मान लो है ना? Yes, sir. ठीक है. What are the chapters coming, Chaitanya, for physics and maths? So for physics, it's gravitation and rotational motion, and for maths, straight line and sequencing series. Okay. So good. Practice it from in mathematics. Practice it from R.D. Sharma also once. Huh? Yes. ठीक है. अभी तो टाइम है. आज जल्दी खत्म हो गया हमारा. थियोरेटिकल था ज्यादा. Let us do a question. Just a minute. Huh? Let's do a question. Just give me a moment's time. Huh? लीव इट बच्चों. आप लोग 5-6 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग मैथ्स ही करेंगे, है ना. इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने के लिए. और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे करेंगे. ठीक है. सो लेट्स मीट